If it is movement is another way of movement of the constituent is called as diffusion or dispersion. Both name are used it, dispersion or diffusion. It is a process of movement or transport of the constituents in the direction of the reducing or decreasing concentration of the constituent. If a water body is standing, it is not moving, and I add some constituent or some color or some tracer into it, then depending upon the movement of the molecules, after some time it disperses to the other places also. It does not remain over there. So this kind of transport, which is not because of the bodily movement of the fluid, but because of the molecular movement of the fluid, so that is called as diffusion. Clear हो गया? Diffusion is process of the transport or the movement of the constituents, and it has been seen that this process moves towards reducing concentration direction. If I add a tracer into a water body and concentration over here becomes same as the concentration on the surrounding area, no diffusion will occur. If slope of the concentration or the gradient of the concentration is zero, diffusion will not occur. So this kind of movement will not occur. So this kind of movement is said to be function of gradient of concentration or spatial slope of the concentration, delta C over delta X. We say flux in case of diffusion is proportional to concentration gradient. Or I think everybody is familiar, gradient will not make you alarm. Gradient is slope. Change of something divided by the length in which that change occur, that is slope. अगर ये elevation है तो elevation की slope है, अगर ये concentration है तो concentration की slope या gradient है. So if there is no change in a certain length, gradient is zero. So flux because of the diffusion is proportional to partial C over partial X, which is the gradient of concentration, and we multiply it with the coefficient of proportionality and its units. We call it diffusivity dispersion coefficient. हम इसको diffusivity coefficient या dispersion coefficient कहते हैं, E कहते हैं. Its units can be found from the unit of F and unit of delta C over delta X. F के unit क्या थे? Flux. Flux के unit क्या थे? Flow rate of the constituent per unit area और kg per meter square per second. फ्लक्स के ये यूनिट थे, ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो अगर यहाँ पे केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है तो यूनिट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन विल बी, इसके क्या यूनिट होंगे डेल्टा सी और डेल्टा एक्स के? हाँ जी, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. इसमें पर सेकंड कंसंट्रेशन में तो पर सेकंड नहीं आता ना. कंसंट्रेशन इज अ लोकल फिनोमेना है, इट इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम. इमरान तुम्हारी आवाज पहचानी जाती है, इमरान ही बोल रहे हो ना? यस सर. हाँ जी, शुक्र है जाग रहे हो और कंट्रीब्यूट कर रहे हो, गायब भी हो जाते हो. मसला किस चीज का था? लाइट चली जाती. अच्छा चलो, अल्लाह तुम्हारे मसले हल करे हर तरह के. तो डेल्टा सी और बुलवाया इनको स्पेशल. इसको कहा यूईटी बुलवाया वैसे? जी हॉस्टल बंद हुआ है इनको, फिर कहते थे मैं लेट आना है. वेरी गुड वेरी गुड. ये है ना खिदमत कल. तो जो यूईटी बैठे हुए मेरे कमरे में 5 बंदे तो आराम से आ सकते हैं. ओके, सो पार्शियल सी और पार्शियल एक्स के यूनिट होंगे. सी के क्या यूनिट्स हैं? केजी पर क्यूबिक मीटर, ऐसे ही है. और इसके हैं डिवाइड बाय एक्स, सो इट इज केजी पर क्यूबिक मीटर पर मीटर. और इसको उधर ले जाओ,
डेल्टा सी और डेल्टा एक्स का, तो यू विल फाइंड द यूनिट ऑफ ई एक्स. चेक अगर ये यही यूनिट बनते हैं, लेंथ स्क्वायर पर यूनिट टाइम. Can somebody check me the diffusivity or dispersion coefficient के यूनिट लेंथ स्क्वायर पर यूनिट टाइम बनते हैं? Let me check myself. F के यूनिट्स मुझे पता है kg पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई किया मीटर डिवाइडेड बाय kg per cubic meter से. So kg is gone with the kg, meter square gone with the 2 meter square over here. So it will be meter square per second diffusivity. So this law is very famous and very useful in transport, constituent transport, and this is usually known as the fixed first law diffusion. Same law is applied in case of the conduction of the heat also. This is a heat conduction coefficient होता है, और यहाँ पे partial H और heat energy का gradient होता है. तो ये फिक्स लॉ, और इस तरह के लॉस के आपने सॉल्यूशंस भी पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स में. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में हमने पढ़े हुए. तो दिस लॉ इज नोन एज द फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, that flux of the constituent is a function, or it is directly proportional to the gradient of the concentration. If we multiply it with the coefficient known as the diffusivity coefficient, then we can find that the flux is equal to E times partial C over partial X. If there is no gradient, zero, no flux, because of the diffusion will occur. If there is a concentration difference, so when we add a tracer, if previously it has same concentration of that tracer in the water body, and if we add some tracer, then concentration gradient is created automatically, because at one place I am adding it, at other place it is not there. So from one location to the other location, this gradient is created. When this gradient is created, then it starts diffusing. So this flux per unit time can be calculated by the diffusivity coefficient of that tracer. This diffusivity coefficient is function of फ्लूइड इटसेल्फ, किस फ्लूइड में डाला है, पानी है, मिल्क है, शहद है, उस पर डिपेंड है. इट इज फंक्शन, दिस डिफ्यूजिविटी कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेसर इटसेल्फ, वेदर आई हैव हाईली डिफ्यूजिव ट्रेसर डाला हुआ है या कम. सो ट्रेसर पे डिपेंड करता है. इट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर आल्सो. So it is dependent upon various factors. So for various constituent or tracer, we can the literature tell us that diffusivity coefficient for this kind of tracer is so much, diffusivity coefficient for this kind of tracer is so much, and it depends upon the molecular binding of the tracer and the attraction between the fluid and this one, and the molecular movement which is dependent upon the temperature of that body. So that is one way of the transportation. Fick's law should be known. Anybody will tell me the negative, and they have described it over here. What is the reason of this negative sign over here? Reason of the negative sign over here is in the direction of the reduction, in the direction of the reduction of the concentration. If you find the gradient, if you find the gradient slope C1 minus C2 or C2 minus C1 divided by X2 minus X1, so it will come negative. In the direction of the reduction of concentration, delta C or delta X, mathematically it will come negative value, because flux have to go in that direction, because flux moves towards the reducing concentration. So to get a positive flux value, mathematically a negative sign is multiplied over here. So that is described over here. The negative sign in the equation describes that flux is positive in the direction of the lowering concentration, in the direction of the negative gradient. ठीक हो गया? जैसे हमारा पानी जो है वो लोअर स्लोप की तरफ जाता है, तो वहां पे हम क्यों नहीं नेगेटिव का साइन यूज करते? जब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो दैट
should move in the direction of the lower gradient. तो वहां पे भी तो लोअर ग्रेडियंट नेगेटिव ही होता है, तो वेलोसिटी क्यों पॉजिटिव आ जाती है? सोचा है कभी? 438 सर वो हम डाउनस्ट्रीम में जब जो फ्लो है हमारा हम उससे पॉजिटिव लेते हैं। डाउनस्ट्रीम में हम फ्लो पॉजिटिव लेते हैं, दैट्स ट्रू, बट मैथमेटिकली पॉजिटिव क्यों आ जाता है? स्लोप इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन शुड बी नेगेटिव, so negative slope should give you a negative velocity. V is equal to 1 over n s under root, ऐसे है कुछ। तो s should have been negative over there. डाउनहिल में स्लोप अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करो तो फाइनल एलिवेशन माइनस इनिशियल एलिवेशन ये नेगेटिव आना चाहिए। कुछ समझ आ रही है बात की? ये आपकी चैनल है, उम्मीद है मेरी वीडियो ऑन है। तो इसकी अगर आप स्लोप कैलकुलेट करो, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो इसकी स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए। तो इट शुड गिव यू अ नेगेटिव वेलोसिटी। सर हमने माइनस वी यूज किया था फार्मूले में, तो माइनस वी ओवर डेल्टा। हमने क्या किया है? सर जब हम स्लोप वगैरह यूज करते थे तो माइनस फार्मूला उसका यही होता था, रिलेशन माइनस बी ओवर डेल्टा एक्स या डेल्टा एल, जितना भी वो स्पेसिफिक लेंथ होती थी उसकी। हाँ, जा तो ऐसे ही रहो। क्या फार्मूला होता था? माइनस वी ओवर डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा जी और डेल्टा एक्स। तो ये वहां पे हमने हाथ किया हुआ था कि मैथमेटिकली वो स्लोप नेगेटिव आती है, बट वी मल्टीप्लाई दैट स्लोप विद द नेगेटिव साइन so that flow should be in the direction of the reducing gradient। वहां पे भी यही था, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे हमने स्लोप के साथ हाथ कर दिया था, यहाँ पे इस डेल्टा सी और डेल्टा एक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ये भी वही तकरीबन चीज है। तो वहां पे हमें नेगेटिव नजर नहीं आता, बिकॉज इन अवर फार्मूला वी हैव यूज्ड द स्लोप एस। इफ वी हैव यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्लोप डेल्टा जेड और डेल्टा एक्स, तो फिर नेगेटिव भी वहां नजर आएगा, फिर इसी तरह का वो। So flux is in the direction of the reducing concentration gradient, a negative concentration gradient. That's why a negative sign comes over here. So this diffusion, why do it occur? It is because of the one reason is because of the molecular movement. Always the particles of mass are vibrating, but they are not moving from their place bodily. Over the time they remains at that place, but they are vibrating. It occurs because of the molecular action or molecular movement, and it depends, this molecular diffusion depends upon temperature, fluid type and constituents, and it can occur in a standing water body also. Diffusion can occur. It is of interest to, but its quantity is said to be very small, and it is of interest to the chemist. This kind of diffusion, which occurs because of the molecular movement, is not of much interest to river or surface water experts. Instead of that, another kind of diffusion, we call it turbulent diffusion. That is much higher as compared to this molecular diffusion. So most of our transport in river bodies, that occurs because of another kind of diffusion, we call it turbulent diffusion. This diffusion occurs because of the turbulence or random movement of the molecules in all the direction. Actually, those movements are randomly in x, y and z direction, so the water body has some velocity in x, y and z direction. So that is causing the mixing of the constituents. More theoretically, this will become a kind of advection if we can measure the turbulence velocities also. If we can measure the turbulence velocity in x, y, and z, so then this will be this can be handled in the similar way as advection is handled. But
So this kind of mixing is also combined with the diffusion, and it's measured with the help of a turbulent diffusivity coefficient. It is handled in the similar way as we handle the molecular diffusion. So turbulent diffusivity coefficient is much higher. It is 1 to 10,000 centimeters square per second. It is much bigger than the diffusivity coefficient because of the molecular diffusion, and its range in SI units can be 1 to 10,000 centimeters square per second, or in foot system it is 0.001 to 10 feet square per second. It is measured using a tracer study. We can not directly measure this turbulence diffusivity. Like we can measure the molecular diffusivity for certain tracer, we can measure that one, and it is reported in the literature. But because turbulence diffusivity, we take it like a Manning's N coefficient, we take as a calibration coefficient. In flow modeling, in flow simulation, N is dependent upon the roughness, it is dependent upon vegetation, it is dependent upon the undulation in the channel. So it is difficult to physically measure it. So we assume a certain value of N, and then we calibrate the model and we change N so that observed water depth becomes equal to the simulated water depth, and this process is called as calibration. Similarly, this turbulence diffusivity coefficient is difficult to measure because turbulence velocities are difficult to measure. So we assume a certain value of turbulence diffusivity, and then we run the model, and from the observed concentration, observed transport concentration at some places, we calibrate the model. So in most of the study, this diffusion coefficient which is in this range is assumed, a suitable range is assumed, a value is assumed, and then model is calibrated by comparing the simulated concentration with the observed concentration.